So, a very good morning to everyone who have actually participated in this webinar. And this webinar is going to be on utilizations of Bagasse ash as a brick material, which will be handled by Professor Mayank Gupta. Coming to Professor Mayank Gupta was an assistant professor at Jai Narayan College of Technology since 2013 till 2015 and is an assistant professor in Saga Group of Institutes since 2015 to now. Coming to his specializations, structural engineering, technical engineering, education and training, and project design are his exclusive specializations. And coming to his academic experience, he have a lot of experience in online learning and moocs training, needs analysis, training design, implementation and evaluation, educational project preparation, design, implementation and evaluation, conduct of educational research studies, learning resources development, both print and non-print, educational policy design, curriculum development, educational management, teaching postgraduate classes since 2016. He has published many submissions in multiple journals and attended many international conferences too. And he is currently an editorial board member of Gnome Publications in Journal of Architectural and Civil Engineering. And we are very glad to have his on the board. And this particular webinar will be on utilizations of Bagasse ash as a brick material. And yes, Professor Mayank, please go ahead with your presentation. Sure. Hello. Hello. Yes, Am I audible? yes, you're audible. Please go ahead. Is my screen is showing on your? Yes, I can see your screen very well. Okay. Am I audible to all the audience? Yes, it is. Okay. Good afternoon, everyone. This is Mayan Gupta from Sage Group, Bhopal, and I gave a brief description about utilization of bagash as a brick material. So, in my presentation, index about baggage, chemical composition, physical composition, use of baggage, manufacturing of brick, use of baggage in brick, and conclusion. First, in India, all you know that the waste material is very much. As we all know that the waste from the industries is very harmful for all the environment as well as to our health if not disposed in proper manner. The fibrous residue of sugarcane after crushing and extraction of juice is known as bagage. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, जैसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए हिंदी कंफर्टेबल रहेगा. बैगेज क्या है? जो शुगर केन को अपन क्रश करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका जूस, उसके बाद जो बचता है उसको अपन बोलते हैं बैगेज. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर रेसिड्यू इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर रेसिड्यू की बात करी जाए तो वो बैगेज है. द बैगेज इज हाउएवर यूज एज अ बायोमास फूल for boilers, but after burning the byproduct of left is no use and generally disposed into the river, which affect the health of human being, environment, fertile land and water bodies, etc. Bagasse को अपन एज अ बायोमास फ्यूल यूज करते हैं बॉयलर में. जब उसको अपन बंद कर देते, जला देते हैं तो उसका एक बाय प्रोडक्ट बचता है जिसको अपन डिस्पोज करते हैं रिवर में. वो बहुत खतरनाक है इन्वायरमेंट के लिए. तो बीइंग अ सिविल इंजीनियर, बीइंग अ सिविल फैटर्निटी, उसको हमने यूज किया है. उसको बहुत जगह यूज कर सकते हैं, कंक्रीट में, ब्रिक्स में. मैंने उसको ब्रिक्स में यूज करके ब्रिक्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाया है. How baggage is prepared? All you know that it comes from the sugar cane. You know शुगर केन. सबसे पहले शुगर केन से वो गया मिल में. मिल से हमने उसको जूस निकाल के जो उसका बाई प्रोडक्ट बचा वो बचा बैगेज. बैगेज को हमने बॉयलर में यूज किया. बॉयलर से जो बाई प्रोडक्ट बचा, जो जलने के बाद जो चीज बची, उसको अपन बोल रहे हैं बैगेज. इन दिस फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं कि शुगर केन से शुगर क्रिस्टल कैसे बन रहा है. शुगर केन, मिल, सैप, प्योरीफायर, प्योर सैप, इवापोरेटर,
sugar crystal. Am I audible to everyone? Hello? Hello? Yes, Professor, you're audible to everyone. Okay, okay. Everyone Thank is you. going through your presentation. Thank you. Thank you so much. Yeah, welcome. And chemical composition of bagasse. It is very important. ये बहुत जरूरी है आपको अगर किसी मटेरियल को किसी चीज में मिक्स करना है तो उसका केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल कंपोजिशन जानना बहुत जरूरी है इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैग ऐश फर्स्ट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा बैग ऐश और बैग ऐश ऐश में क्या अंतर है ये बैग ऐश है और ये आपको स्क्रीन पे जैसे दिख रहा होगा बैग ऐश जलने के बाद जो प्रोडक्ट बच रहा है उसको अपन बोल रहे हैं बैग ऐश और बैग ऐश एक आपका रॉ प्रोडक्ट है और ये फाइन बैग ऐश आपको फोटोज में दिख रहा होगा अब अपन केमिकल कंपोजिशन पे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोजिशन SiO2 73%, Al2O3 aluminum oxide 6.7%, ferrium oxide 6.3%, calcium oxide 2.8%, magnesium oxide 3.2%, P2O5 phosphate 4.0, calcium, sodium 1.1, K2 potassium loss of ignition 0.9%. आप सबको जैसे पता है या कि सिलिका इज एन इंपॉर्टेंट बाइंडिंग मटेरियल सिलिका एक इंपॉर्टेंट बाइंडिंग मटेरियल है जिससे बहुत सारे कंटेंट्स बाइंड होते हैं तो इसमें भी सिलिका की मात्रा ज्यादा है सिलिका का कंटेंट ज्यादा है इसलिए अपन इसको एज अ बाइंडिंग मटेरियल ब्रिक्स में और कंक्रीट में यूज कर सकते हैं जैसे आपको पता है कि सीमेंट में सबसे ज्यादा सिलिका कंटेंट होता है उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है तो सिलिका को अपन यूज कर रहे हैं इसलिए हमने बैग ऐश को ब्रिक में यूज किया दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बैग ऐश डेंसिटी 0.4 स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 फाइनेस पासिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट 95 फ्रॉम 45 माइक्रोन स्पेसिफिक सरफेस एरिया 900 मिनिमम ग्रेन साइज 5.1 Hello. Can I interact with participants? Yes, you can interact with your participant. Hello. Am I Yes, you audible can. to am I audible to all participants? Please, if you have any question, if you have any doubt, you can ask. Yes, participants, those who are having any questions, you can just put in the chat box that will be dealt, or you can just raise hand so that I'll make you speak, so that you can raise your question, which will be answered. First of all, you can actually place your question in chat box that will be dealt very clearly by Professor Mayank Gupta. So, Professor Mayank, if they have any questions, they'll put there Okay. in the chat box. You can Okay. just go ahead with your presentation. Okay. 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 Yeah, Thank you. thank you. Manufacturing of bricks. Bricks कैसे बनती है? First of all material are collected from various sites. Baggage from जैसे मैंने baggage जो लिया था भोपाल शुगर इंडस्ट्री से लिया था सीपेट से ये आपने बैगेज को पूरा वहां से ले लिया फिर मटेरियल को आपने एक रिक्वायर्ड प्रपोर्शन में मिलाया जैसे आप फोटो देख रहे होंगे कि मैंने उसको एक रिक्वायर्ड प्रपोर्शन में मिलाया ये आप देख रहे हैं देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू मिक्स मटेरियल टू फ्रॉम द पास्ट ऑफ ब्रिक्स आपने एक क्वांटिटी में रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आपने वाटर को मिलाया देन उसको मोल्ड्स में रखा आपने उसको मोल्ड्स में आपने जो मटेरियल बनाया है उसको आपने इसमें भर दिया ब्रिक के तो ये आपको एक ब्रिक का शेप मिल गया then the finalizing process of the mold is done with some vertical movement to the mold so the paste can be fully adjusted in the mold आपको उसको मोल्ड में पूरे अच्छे तरीके से भरना है जिससे कहीं भी voids ना आपको voids ना मिल जाएंगी फिर उसको आपने लास्ट में उसको आपने प्रेस कर दिया very carefully to the desired shape the last process of demolding the paste is carried out very carefully
so that the desired shape of the brick must be attained. ये आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑल द प्रोसेस द ब्रिक्स आर फाइनली फॉर्म्ड। आप जैसे देख रहे हैं कि ब्रिक्स आपको एक शेप में मिल गया। इसमें बहुत सारे आपको टेस्ट करने पड़ेंगे जब आप किसी मटेरियल को मिलाते हैं। तो सबसे पहले आप जिसमें मिला रहे हैं उसका आपको सबसे पहले बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे मैंने ब्रिक्स के लिए मैंने एक वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट किया। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ड्राई द स्पेसिमेन इन वेंटिलेटेड ओवन एट द टेम्परेचर ऑफ द 105 डिग्री टू 115 डिग्री टिल इट्स सस्टेनली कांस्टेंट मास। पहले मैंने उसको पूरा ड्राई कर लिया। कूल द स्पेसिमेन एट द रूम टेम्परेचर एंड इट ऑब्टेन्ड वेट। फिर मैंने उसको कूल किया और फिर मैंने उसका वेट लिया जिसको मैं बोल रहा हूँ M1। इमेंस कंप्लीटली ड्राइड स्पेसिमेन इन क्लीन वाटर एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स। फिर उसको मैंने वाटर में एब्सॉर्ब किया 27 डिग्री टेम्परेचर 24 घंटे के लिए। रिमूव द स्पेसिमेन एंड वाइप एनी ट्रेसेस ऑफ वाटर विद damp cloths एंड वेट द स्पेसिमेन आफ्टर इट्स मास रिमूव फ्रॉम वाटर। उसको मैंने बोला M2। देन यू गेट द वेट M1 initial weight minus M2 upon M1. The second test we have find compressive strength test. Preconditioning remove unevenness observed in the bed faces to provide two smooth and parallel faces by grinding immense in water at room temperature for 21 hours. Remove the specimen and draw out any supply moisture at the room temperature. First, we have to do preconditioning. Then second test is compressive strength of bricks. Place the specimen with flat faces horizontal and mortar filled faces being upward between 2-3 plywood sheets each of 3 mm thickness and carefully centered between plates of testing machine. Apply load actually at a uniform rate of 14 Newton per mm square per minute till failure occurs and note the maximum load at failure. The load at failure shall be maximum load at which specimen failed to produce any further increase in the indicator of the reading of the test machine. This is the general formula of compressive strength. Maximum load at failure in Newton upon average area of the bed faces in mm square. I can show this machine. इस मशीन में आप देख रहे होंगे मैंने ब्रिक का मोड लगाया, ऊपर से मैंने लोड लगाया। लोड आपको डायल गेज पे आपको एक निडल शो हो रही होगी, उसमें आपको रीडिंग दिख रही होगी। आप लोड लगाते जाएंगे, आपको जब तक लोड लगाना है जब तक उसमें क्रैक्स ना दिखें। जैसे आपको क्रैक्स दिखेंगे आप उसको नोट कर लेंगे, वो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, लोड कितना लगाया उसका एरिया कितना है, जिस एरिया पे वो लोड अप्लाई हो रहा है। Then the fourth test is efflorescence of test brick IS 3495 1992. Distilled water was filled in the dish of suitable size. The dish should be made of glass croclane or glazed stone where place the end of brick in the dish, the depth of immersion water being 25 mm. Place the whole arrangement in warm, for example 20 to 30 degree, well ventilated room until all the water in the dish is absorbed by the specimen and the surplus water evaporate. When the water has been absorbed and the brick appear to be dry, place a similar quantity of water in the dish. Allow it to evaporate as before. Examine the brick for evaporation after second evaporation and the report the result. इसमें आपको एफ्लोरेसेंस की उसकी खुशबू क्या हो रहा है, एफ्लोरेसेंस खुशबू वो क्या हो रहा है। जब आपने वाटर को पानी में डुबो दिया, उसको निकाला, तो आपको देखना है कि उसमें वो कितना इवेपोरेट हो रहा है, कितनी चीजें उसमें इवेपोरेट हो रही हैं। The liability of efflorescence shall be reported as follows: nil when there is no precipitate deposit of the efflorescence slide, no more than 10% area of brick covered within thin deposit of salt, moderate covering up to 50% expected exposed area of the bricks, heavy 50% or more uncompelled by powering of flaking of brick surface, seriously when there is heavy deposit of salt accompanied by powering and flaking of export surface. मेन इंपॉर्टेंट व्हाट इज रिजल्ट्स। मैंने 4 सैंपल बनाए, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 एंड सैंपल 4। बैगैश की क्वांटिटी मैंने बढ़ाई 10%,
20%, 30%, 40%। लाइन परसेंटेज मैंने 40% रखा, 35, 30 एंड 25। क्वेरी डस्ट 40, 35%, 30% एंड 25%। और स्क्रैप जो वेस्ट मटेरियल था वो मैंने सब में कांस्टेंट रखा 10%। दिस इज माय डिटेल ऑफ कंपोजिशन ऑफ माय सैंपल्स। फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सैंपल ब्रिक्स। मैंने 4 सैंपल बनाए। सबसे पहला जो मेरा ड्राई वेट था उसका वो था 2.380, सेकेंड का 2.28, 2.152 एंड फॉलो ऑन 1.957। वेट था 2.965, 2.769, 2.683, 2.42। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि कंप्रेशन स्ट्रेंथ मेगा पास्कल में आप देख रहे हैं, जब मैंने जिसमें मैंने 10% मिलाया वहां पे आप देखिए 6.40 आपको एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल रही है। 20% पे मेरे को 5.30 मिल रही है, 30% पे 4.45 मिल रही है, और 40% पे 4.30 मिल रही है। एफ्लोरेसेंस नील है। ये आप डेंसिटी वर्सेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक देख रहे हैं। आप देख रहे हैं डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में देख रहे हैं आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी कम हो रही है अगर आप परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं तो। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन बैग एश ब्रिक एंड फ्लाई एश इन ऑर्डिनरी क्ले ब्रिक। ऑर्डिनरी क्ले ब्रिक की आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.50 मिल रही है, वेट 3.50 है उसका, डेंसिटी 2176, वाटर एब्जॉर्प्शन 15%, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ 6.082। फ्लाई ऐश का देख रहे हैं 5.50 मिल रही है। हमने जो इसमें बैगैश मिलाया 10% पे, तो मुझे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 6.40 मिली एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी क्ले ब्रिक और फ्लाई ऐश ब्रिक। और मेन चीज तो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल गया। उसके बाद आपने जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको मैंने बेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में यूज करने की कोशिश करी है। ये आप कंपैरिजन वेट देख रहे हैं ऑर्डिनरी क्ले ब्रिक का, फ्लैश, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4। दिस इज द कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट। बैगेश आपको 0.20 रुपीज, लाइन 2 रुपए, कॉरिडोर 0.35, स्क्रैप 1.5। अगर मैं रुपीस में बात करूं ऑर्डिनरी क्ले ब्रिक तो आपको वो मिल रही है 5.5 रुपए की, फ्लैश 5 रुपए की। जो मैंने क्यूरिडस, लाइन, बैगेश को यूज करके मैंने जो 10% यूज किया तो उसकी मुझे कॉस्टिंग मिल रही है 3.30। दूसरे सैंपल की 3 रुपए 12 पैसे, 3 रुपए 3 पैसे और 2 रुपए 85 पैसे। ये कॉस्ट का कंपैरिजन है। अगर कोई डाउट है आपको तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। That was a nice thing that I have gone through today, Professor Mayank. I या have a question like, you have explained that the price wise, the Bagasi brick would be costing us less. या So, what about the complexity? Will that withstand the huge constructions? Is there any problem with the huge construction या things if we make use of Bagasi? yeah. It baggage I have used in this type of bricks in boundary walls. Boundary Okay. walls. It can be used in partition walls, but it cannot be directly implicated on the walls where the load is much more. Okay. Yeah. So yeah, this usage of Bagasse bricks can be done in the compound walls and in In structures a where there is it's no yeah heavy load yeah is kept on, yeah right? yeah 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 sure yeah. That was a very new invention that I have seen, and it will be very cost effective, and it will also will
decrease lot of decrease, financials for the construction. and it decreases also the waste material to the society. That's great. Yeah. Uh, So yeah. So any yeah, questions from the participants? I haven't heard any questions from the participants. Yes, participants, if you have any questions, you can just poke them then and there. You can just raise your hand, or you can just post your question in the chat section so that Professor Mayank will be answering it. I also want to request you, Professor Mayanki, is that possible for you to publish your work with us? Because it's very interesting and it sounds really good. Yeah. Okay. And yes, on behalf of Professor Mayank, I would also request all the participants and students who actually doesn't know many things about the publications. Professor Mayank would be helping you out how to get your work get published with us. And I also would like to assure Professor Mayank at this particular moment that we will Yeah. be there to assist your, you know, students and you to publishing sector. And I have like Sakshi is having some question. Yeah. Sakshi, would you like to raise your hand, or would you like to post your question in the chat? If you want to raise your hand, please raise your hand icon so that I can make you talk. Okay, please post your question in chat, or you can just raise your hand also. You can speak. Anything is fine. Yeah. The question I hear from Sakshi is plastic waste can be used in brick material. Yes. यस, हाँ, प्लास्टिक वेस्ट को यूज कर सकते हैं आप, पर वो किस फॉर्म में है, उसका ग्रेन साइज क्या है, उसके पार्टिकल साइज क्या है, उसको अपन अगर किसी तरह मिक्स कर रहे हैं तो किस फॉर्म में मिक्स कर रहे हैं, वो पहले आपको देखना पड़ेगा। प्लास्टिक को आपको पहले क्रश करना पड़ेगा, उसकी क्रशिंग साइज को चेक करना पड़ेगा कि वो उसके साथ मिक्स हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स जो हैं, वो बहुत जगह कंक्रीट में और ब्रिक्स में यूज हुई हैं एज अ वेस्ट मटेरियल। Is that fine, Sakshi, or you still want something to be explained? If so, you can just raise your hand, or you can post your question. And any other participant also can post your question in the chat, or else you can just raise your hand and speak over. On behalf of No Publications and Enliven Archive, I would like to, suggest Professor Mayank to please be active on the editorial board as you are being active as that moment. Sure, And sure. yeah, I invite submissions from your students and from your fellow members to Sure, your journal so that I can sure, help you a lot. And as you those submissions will be referred from your end, sure. we can give them special opportunities also. Okay, sir. If you have a time, please you kindly share about your journal, so my student can participate Yes. in journal. Yes, I can do it. At this moment, I would like to let you all know that we belong to Gnome Publications, and also we also belong to Enliven Archive. Both Enliven Archive and Gnome Publications are open access peer reviewed journals, and all the submissions that are being published in the journals will be reached to infinity number of people in the community without any charges. That means this is free to access. So authors can actually publish their work with us, and that will be peer reviewed with eminent people like Professor Mayank, and it will be published online and lifetime archives or maintained. And all your work will be freely published, I mean freely submitted to many of the people all around the globe. And there are few publication charges that can be covered. And if you are being referred by Professor Mayank and any editorial board member of our journals, then that would be like costing you very less. And we can assure you that your research or your publications will be going beyond the country, and also it will be reaching around the globe. You can reach us either in
I'll just share you my email IDs in the chat. You can just go through contact at unleavenarchive.org or contact at gnomepublications.org. You can just reach with your queries regarding publication to either of the emails. We'll be always ready to help you out. And we have 25 journals in Leaven Archive, and there are 8 journals in Gnome Publications. Among them, Journal of Architectural Science and Civil Engineering is one of the journals where Professor Mayank is an editorial board member since the inception of the journal, and we are vigorously publishing it. And there is a unique feature for us, like, we'll be publishing the submission within 40 days of the submission, where that includes revision and re-revision of the articles also. If there is no revision and re-revision of the articles, that will be much faster. And we have established editorial board from around the globe, starting from USA to Australia, and hence your research will be flowing around the globe, and you don't know when your work will be valued. So once you showcase your work with our publication interface, you may reach all the members from the globe, and there are many opportunities that are going through, and you can actually be open to those opportunities. I can assure you that our editorial board members from around the globe will be helping you in all the means, and your research will be increased, and your quality of the publications and quality of your content will be increased day to day for sure. And yeah, Professor Mayank, if you want to add any word to particular thing, please go ahead. या थैंक यू सो मच। और कुछ डाउट किसी को कुछ पूछना है तो बिल्कुल वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Yes, you can just raise your hand, or you can just post your questions in the यस, chat box. चैट बॉक्स। So if you want to actually post the queries to my email ID also, that will be answered after the session even. And there is one more thing that I want to express, that all these webinars will be published online, both in our YouTube channels and also in our websites. ओके So you can go through the links whenever you can. I want next webinar. अबाउट द फ्यूचर स्कोप ऑन सिविल इंजीनियरिंग। ओके ओके श्योर आई That's विल। great, Sakshi. I can see only Sakshi is active in the participants. So yeah, according to your students' wish, we can plan next webinar, श्योर श्योर and yeah, we will plan it, and we'll just get posted to you, Sakshi. Thanks for the upcoming topic. Me and Professor Mayank Gupta will talk about this, and yes, sir, we can make it happen according to your feasible time. श्योर 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 So थैंक यू। anything else that you want to raise in the questions? Sieve There is analysis one is more also done question. before mixing। Yes, 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 yes। Sieve analysis is very important रोशन। कुछ भी मिक्स करने से सब मिक्स करते हैं अपन अगर किसी मटेरियल को, तो सबसे पहले सीव एनालिसिस करते हैं, उससे ग्रेन साइज के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंक्रीट में या ब्रिक में या किसी भी मटेरियल में अगर आपको कोई चीज मिक्स करना है तो सीव एनालिसिस अपन करते हैं। गुड क्वेश्चन। You're welcome, Sakshi. Any questions from the participants? ओके थैंक यू। Yes, you can either reach us to the email IDs that were provided, and yeah, if you have any queries about your publications, just please. Yeah, there is one more question, Mayank. या हाउ मच प्रैक्टिकल साइज Particle size. particle size should be taken? It depends upon the material. It depends upon the material, the what the particle size should be taken. As I show in the physical composition. Wait a minute. As I show the physical fineness passing of 45 micron, 45 micron, 95 mm. The fineness passing should be taken as in the bagasse as a brick material. Anything else?
Any other questions? So you can just post it down. Any queries? If you have any queries about the publications, also you can just post over. We can discuss. And yes, if you have any writings that should be dealt with the publishing, please reach Professor Mayank. Professor Mayank, please help them out to reach us. Sure, sure. So with all your support, we can have this indexed journal, and we can go ahead with so many Sure, successful paths. sure, sure. Anything else for the participants, or we can adjourn the session? I guess there are no more questions, No question. Mayank. We can Yeah, just close the session. sure. Yes, before closing the session, I would like to thank Professor Mayank for your beautiful and innovative talk about the next milestone in civil engineering and architecture. And also, yeah, Thank Mayank you. had shared his email ID. You can just also post anything to his email ID too. And I would like to thank all your students and other participants who have came all the way to attend this webinar. And I guess this webinar will be more useful. And yes, if you have any queries regarding the webinar topic, or if you have any queries regarding your publication, you can just either way reach me or Professor Mayank. Both of us will be contacted. And thanks a lot, Mayank, for you being an editorial board member since inception, and you being active in the journal, and we expect the same in future too. And yeah, if you want to add anything to the vote of thanks, please add over, and we'll just end the session Yeah, out. yeah. Thank you. Thank you, GM Publication. Thank you, Mr. Pavan, for this wonderful opportunity to give deliver a webinar through the medium of Junior Publication. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot, and we are ending the session. And yes, at this outbreak, please everyone stay safe and follow all the rules meant by the government. And hope we all will be out of this pandemic situation soon. And with our researchers in other journals, we'll just keep posting about the updates on the COVID-19. And yeah, stay safe, be happy. Thanks a lot for making this webinar successful. Thanks a lot. Thank you, I'm ending thank the you, session. thank you so Thank much. you.